Hi everyone, very good evening. Warm welcome to all my kiddos, all my young scientists, mathematicians, and architects, engineers, many more, whatever you want to be. Good evening to all of you. Welcome. Today is a new one-shot episode. I'm back with a dhamakedar one-shot episode of 3D Geometry, 3D Geometry Class 11th. Hi Anushka, hi Tachi. Hi Rishabh Anand, hello. How are you? What's up? फाइनल्स जैन में है। ओ तेरी, इतनी जल्दी फाइनल्स जैन तो आ ही गया, समझ लो। जैन तक अपना हो जाएगा बेटा, वन शॉट तो हो जाएगा। मतलब आर दिस वन शॉट हेल्पिंग यू? वन शॉट विल फिनिश। हम अच्छे अश्वी पटेल, हाउ आर यू, केम छो? हाँ, सो या दिस वन शॉट इज गोइंग टू हेल्प यू यार। और हम लोग टेस्ट भी तो ले रहे हैं, तो आपको यू आर गेटिंग नाइस टेस्टिंग का भी फील। मिड टर्म्स है 21 दिसंबर से। आई नो बोर्ड एग्जाम्स का भी कुछ कह नहीं सकते, दे आर नॉट पोस्टपोन, सो बोर्ड एग्जाम्स विल ऑल्सो बी इन फेब एंड मार्च ओनली, दो यू मे गेट more time between two consecutive papers, you may get lot of days compared to earlier, but पोस्टपोन का तो न्यूज नहीं है यार। मई में हो रहे थे, बच्चे आराम से रिलैक्स करके बैठे थे, वो सीन तो नहीं है। सो बोर्ड एग्जाम्स भी शायद टाइम पे ही कंडक्ट होने वाला है। हाँ हिताची, दैट इज व्हाट हैपेंस जनरली। 11th खत्म करो, 12th को शुरू करो। हाय वायुनंदन मिश्रा, आई लाइक द नेम वायुनंदन, सच अ स्ट्रॉन्ग नेम। Yes, pre-boards are already ongoing. Okay. Hi Arvind Jha. जून में फाइनल एग्जाम यार, क्या कर रहे हैं कॉलेज वाले। बट आप जून तक वेट मत करो, प्लीज स्टार्ट योर 12th प्रिपरेशन। 12th बोर्ड एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर दो एटलीस्ट। कुछ नहीं तो कम, मतलब आप यूट्यूब एनसीईआरटी से तो शुरू कर ही दो, ज्यादा वेट ना करो, बिकॉज बहुत कुछ है जो बोर्ड एग्जाम्स का मार्क्स मैटर करेगा, वो 12th का है। तो अगर आप 11th के कैलकुलस पे कर रहे हो, इट्स ओके। जो भी चीज 11th का 12th में कैरी फॉरवर्ड होने वाला है, उस पर तो बहुत ध्यान देना है, जैसे कि ट्रिगो हो गया, कैलकुलस हो गया, ऑल दिस यू हैव टू डू, नो डाउट। ओके, तो आज है वन शॉट, परसों क्या होगा? अगर आज वन शॉट है तो परसों क्या होगा बच्चों? मेगा मेंटी ऑफ दिस एंटायर टॉपिक। हाउ मेनी ऑफ यू लाइक 3D ज्योमेट्री? लाइक है तो लाइक कर दो इफ यू लाइक 3D ज्योमेट्री, और डिसलाइक है तो डिसलाइक नहीं करना है, ऐसा नहीं है सीन। अगर नहीं डिसलाइक करते हो तो आज लेक्चर अटेंड करो, यू विल लाइक इट एंड देन यू लाइक द लेक्चर। ठीक है, डन। इफ यू लाइक 3D ज्योमेट्री अभी लाइक कर दो, अगर आपको नहीं पसंद 3D ज्योमेट्री तो वेट करो, लेक्चर अटेंड करो, और फिर आपको पसंद आता है तो लाइक करना। प्रोबेबिलिटी तो यार कुछ नहीं है, मतलब प्रोबेबिलिटी हिताची मतलब कुछ है ही नहीं, नथिंग, लिटरली नथिंग प्रोबेबिलिटी में। ओके बच्चा लोग, सो ये जो 3D ज्योमेट्री ये 12th में भी है, 12th में ऑल्सो यू हैव 3D ज्योमेट्री। फिर अभी आपको प्रोबेबिलिटी है, 12th में भी प्रोबेबिलिटी। 12th का 3D ज्योमेट्री में प्रोबेबिलिटी में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, बट 11th के इसमें नहीं, ज्यादा नहीं लगाना पड़ेगा, मतलब चिल मार के आराम से ऐसे बैठे बैठे भी कर लोगे, कोई लोड नहीं है। हाय मनोज, चलो तो आज हम लोग इंट्रोडक्शन से लेकर दो तीन चीजें ये पूरे टॉपिक में। 3D geometry, why 3D geometry, why we are entering into the world of 3-dimensional from the world of 2-dimensional studies, then distance between 2 points and section formula. Now you are already well aware with these things. तो हम लोग 3-dimensional क्यों कर रहे हैं? नहीं मनोज, आई एम नॉट टीचिंग फ्रॉम बैंगलोर, बैंगलोर से हम आ गए हैं मुंबई। तो अभी आप लोग ना सोच के रखिए, मैं ये इंट्रोडक्शन देती हूँ अपने बारे में, चैनल के बारे में, आप लोग सोच के रखिए कि 3-dimensional ज्योमेट्री पढ़ना क्यों जरूरी है। मतलब आप 2D पढ़ रहे थे, आपने ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया था, x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y, आप खुश थे इसमें, हम बहुत खुश हुआ करते थे। तो फिर अभी सडनली उसको 3D में क्यों करना है? व्हाई सच अ नीड अराइज?
वेरी सिंपल आंसर, बहुत एक छोटी सी लाइन है, मतलब कॉमन सेंस की बात है, आप बता सकते हो मेरे को. So everybody who is watching this, coming to our channel for the very first time to my lecture, myself Varsha Tiwari, your master teacher on Vedantu. I teach mathematics here for 11th and 12th grade students, and teaching is my passion. ठीक है. और आप लोगों ने अगर टेलीग्राम ग्रुप को अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना बहुत जरूरी बन जाता है अगर आपको कोई भी सेशन मिस नहीं करना है ना. टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है, आपको ऐप डाउनलोड करके NCERT 11/12 फैमिली में आ जाना है. वी हैव सो मेनी स्टूडेंट्स वेटिंग देयर. ऑल्सो लाइक शेयर सब्सक्राइब अभी करो या एंड में करो, कभी भी करो, और हमें मोटिवेट जरूर करो. Anytime you guys can write it to me. See, I always keep this open. मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि since I am on one side of the screen, you are on other side of the screen. ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे बीच में कुछ contact ही नहीं है. There should be a connection. There should be a feel. What we usually get in a classroom. तो इसके लिए मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा I interact with you guys. I get to know आपकी exams कब है, आप लाइफ में क्या हालचाल चल रहा है आपके. तो if you let me know, I'll be more than happy to know. I will be more than happy to read your comments, mails and everything. Hi Sanket. Thank you Manoj. Hi Akshay. Okay. चलो, इताची सिंह XYZ डायमेंशन के कारण, ठीक है. हाँ जी, yes, we will move to 3 dimensions. That what you're saying is absolutely correct. I'm asking why. So 11th class people, if you're targeting your 2022 NEET JEE, है ना, 2022 next year का आप जब NEET JEE target करोगे, you have approximately 1 year, है ना. So if you want to prepare for your NEET and JEE very sincerely, seriously, Vedantu's online platform is all yours, very student centric, there to help you through each stone. It will pass you through each stepping stone that you come across. Each hurdle will be cleared and your online journey will become extremely easy and smooth for you. So you have live lectures, immediate, instant doubt solving, that too live by all the teachers. You have so many master teachers with amazing experiences and amazing journey. They will be sharing their knowledge with you, and you will have very interactive platform on Vedantu, very interactive platform of quizzes and everything, है ना. It's like a proper classroom feel that you'll get. So everything will be covered in depth with comprehensive testing, assignments and feedbacks. Everything is there. So even if you also want to be a part of this great platform, great online platform bringing revolution in education, you can avail this at a 20% discount by using any teacher's code. This 20% discounted prices are here in front of you for 1 month, 3 month and 6 months. You can take this, you can try it out for 1 month. If you like it, go for 6 months or 3 months, whatever you wish guys. And I will give you one coupon code VTI Pro. You can use any other coupon code and just rock your preparation of NEET and JEE. The link for this is provided in the description box. So yeah, do go and check out the link after the lecture. Go to the site, select whatever course you are interested in and check out the prices, the discounted prices after 20% discount of coupon code. Okay, so yeah, let's begin with 3D geometry, introduction to 3D coordinate system. So yeah, what do you say, why 3D, why 3D geometry is important, why do we need to study 3D geometry? Manoj, it's subscription, you can go and check out, it's for CBSE, it's for JEE mains, it's for NEET, and there are various courses, you can go and check out. Okay? NCERT syllabus is your CBSE following, right? श्रेया शर्मा, आई एम गुड, हाउ आर यू? यार आप कल भी थे ना 12th के क्लास में, क्या बोलते हो?
हाँ हिताची यार, दे ताली यही तो पूछ रही थी मैं, बस यही. I mean sometimes the silliest of the answer is the correct answer, so you should not feel uh, shy to answer it because everything is 3D. तो 2D पढ़ के करोगे क्या? 2D पढ़ के करोगे क्या जब सब कुछ तुम्हारे आसपास में 3D में चल रहा है? तो फिर क्या है, 3D तो पढ़ना ही पड़ेगा ना भाई, यही तो आंसर था. ओके एनीवेज, सो चलिए बढ़ते हैं आगे कि इंट्रोडक्शन टू 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम. सो एज यू ऑलरेडी सेड देयर विल बी 3 x y एंड z एक्सिस. देख सकते हैं एक सेंटर होगा, सेंटर को कोई नहीं हिला सकता. when you had two dimensional thing like the screen of your mobile right now, जो एक 2 dimensional object है, उसमें एक ही plane है. if you consider x and y axis, so there is one single plane, xy plane, बरोबर. but when you have 3 axes, how many planes are possible? we have number of planes possible: xy plane, yz plane and xz plane. Now xy plane, you can see ये जो x और y, the horizontal lines are your xy plane. Mobile screen, Risha, mobile का screen, when you just notice at the screen, it's not 3D, am I right? अभी तक 3D mobile तो launch नहीं हुआ है मेरे ख्याल से. 3D mobile screen, even theaters में भी तो वो 2D होता है screen. आपको 3D ग्लासेस लगाने पड़ते हैं अगर आपको ऑब्जेक्ट्स को देखना है 3D में. तो दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. यस, बट वो दिन दूर नहीं जब मोबाइल में भी 3D वाली टेक्नोलॉजी आ जाएगी. मतलब आ ही गई ऑलमोस्ट, वो लगा के तो लोग देखते ही हैं. आई नो दैट दे यूज दोस, बट मे बी विदाउट दैट समडे, लेट्स होप. So if you look at this horizontal lines, they become your xy plane. ये जो थोड़े से ऐसे लाइंस दिख रहे हैं, ये y और z के बीच में है, so that's your yz plane. और यहाँ पे ये x और z के बीच वाले लाइन बन गए xz plane. बहुत सिंपल, वेरी इजी. Now you guys tell me, if I take any point here, I am taking a point P here in this xy plane, तो उसके कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होगा? उसका कौन सा कोऑर्डिनेट आपके हिसाब से 0 होगा? कैन यू गाइस टेल मी? यस मनोज. हाँ यस, द z कोऑर्डिनेट विल बी 0, सो x एंड y कोऑर्डिनेट विल बी प्रेजेंट, z 0 होगा बाय डिफॉल्ट. वैसे ही मैंने कोई भी पॉइंट ले लिया yz प्लेन में, तो कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होगा yz प्लेन में? यस, x कोऑर्डिनेट विल बी 0. ये तेरी, हाँ, x कोऑर्डिनेट विल बी 0 एंड रिमेनिंग 2 विल बी देयर. बरोबर. तो वही डायग्राम को मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही हूँ. कैन यू सी? इफ यू हैव एनी पॉइंट P, ये पॉइंट P है, उस ऑल 3 कोऑर्डिनेट्स आर प्रेजेंट, बिकॉज ये बीच में है. ये ना xy प्लेन में, इट इज नीदर इन yz प्लेन, नीदर इन xz प्लेन, इट इज प्रेजेंट इन ऑल 3 प्लेन्स. So this point P has all 3 coordinates present A, B, C. But if you look at this point A, it is properly in xy plane, its z coordinate is 0, है ना? This point B is specially on y axis, so its x and z coordinate 0, only y coordinate present. बराबर. C पे आता है. This point C is in y z plane, so its x coordinate is 0, yz plane में x coordinate is 0, as you all pointed out. This is your origin, all point 0. This is specially on z axis, so z axis पे x and y coordinate 0, only z coordinate present. This point C के बाद क्या आता है? A, B, C. This was D, this was E. E point, for E point is present in xz plane, so its y coordinate is 0, x and z coordinates are present. E के बाद आएगा F. For point F, it's on x axis, so x coordinate is present, y and z coordinates are 0. So this is what the points will look at. The most important point is this point P, which is present in all 3 coordinates. Okay,
साईराम बोल रहे हैं मैम क्लास 11 के लिए भी कुछ चाहिए मैम आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सिलेबस प्लीज। डन डन बेटा डन। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सिलेबस हम कुछ स्पेशल लेकर आएंगे आपके लिए भी, ठीक है। अब उसका खुलासा हम करेंगे धीरे धीरे। लेट अस प्लान व्हाट इज द बेस्ट फॉर यू। जैसे 12th के लिए सुपर क्रैश कोर्स की जरूरत इसीलिए पड़ गई क्योंकि फेब में एग्जाम है बॉस एंड वी आर इन दिसंबर। क्रैश कोर्स ही करना पड़ेगा इस टाइम पे। मैं ऐसा नहीं बोल सकती चलो अब हम ये करेंगे वो करेंगे, नहीं बोल सकते हम। तो क्रैश कोर्स वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। लेट अस डिसाइड 11th के लिए क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डू वी नीड मोर रिविजन, डू वी नीड some miscellaneous questions, do we need exemplar questions, do we need what? Let's decide. Your feedbacks will be the most helpful in it. Sprint चाहिए, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशंस भी कराना है श्रेया, श्योर करेंगे यार। सुपर क्रैश को शुरू हुआ है, सब कुछ करेंगे अभी, सब कुछ करने वाले। चलिए, so what will be the equation of xy plane, like equation of x axis? अगर मैं आपको पूछती थी equation of x axis, so it's y equal to 0. straight line chapter में पढ़ा है, equation of x axis is y equal to 0. equation of y axis क्या है? x equal to 0. similarly equation of xy plane is z equal to 0. yz plane is x equal to 0 and zx plane means y equal to 0. अभी देखा xy plane में z कोऑर्डिनेट 0 होगा, yz प्लेन में x कोऑर्डिनेट 0 होगा एंड zx प्लेन में y कोऑर्डिनेट विल बी 0. दैट फॉर्म्स द इक्वेशन ऑफ ऑल थ्री प्लेन्स. सो एनीबॉडी आस्क यू टेल मी द इक्वेशन ऑफ थ्री प्लेन्स, क्विकली टेल दिस थ्री इक्वेशंस. This is the same diagram that we just saw some time back. Coming to the formulas, now we have studied this two-dimensional formula x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. Just extend it to the z coordinate with no other change, z2 minus z1 the whole square. Just add kar do. This will give you the distance between 2 points in three-dimensional. Now, the point that divides AB in three dimension in the ratio m is to n is given by this formula. ये दो तो हम किया ही करते थे, उसमें हमने z को ऐड कर दिया. just add z in it and you get your third coordinate also. So simple. This is your internal division. If it's external division, you'll just add a minus sign. Instead of plus, you will put minus. I hope everybody knows this two formulae. And then centroid of a triangle for two dimensional we knew. For two dimensional के लिए यहाँ तक था, three dimensional के लिए z को भी ऐड कर देना होगा. So this is your centroid formula. These three formulas super duper easy. Let's move on, jump on to the questions, hop on to the questions and kill the questions. Vector हो गया क्या बेटा? Vector of class 1, yes. Class 12 का vector हो गया, बिल्कुल हो गया. Jazz Manik, yes. Hi बेटा, hi. वेलकम. लेट आ रहे हो? चलिए, a point is on the x axis. What is its y coordinate and z coordinate? Come on guys. अभी ये पहले 2-3 क्वेश्चन आप ही आंसर कर दीजिए. मतलब मैं नहीं करने वाली यार, नहीं, मैं नहीं कर रही. हाँ, it's 0 0. देखो क्या स्मार्ट है, देखो क्या स्मार्ट है. so smart. चलो, one more guys. A point in the xz plane, what can you say about its y coordinate? Yes, so smart again. Look, you know everything, right? Yes, obviously. You are smart like me. I like that. Yes. So I'm very genuinely saying you guys are smart. I genuinely say that and I genuinely mean that always. Find the distance between the following pairs of points. This is your point. Find the distance between them. Suppose A is your 2, 3, 5 and you will also have to call them, give them some name. जैसे तुम सबका इतना प्यारा प्यारा नाम है, वैसे इनका भी कुछ नाम और पोजीशन दे दो. जैसे A नाम दे दिया और पोजीशन उसको बता दिया.
x1 y1 z1 x2 y2 एंड z2। अरे इतने जल्दी आंसर, मतलब ये भी मुझे नहीं करना चाहिए ना। यस आई थिंक नहीं करूं। सो स्मार्ट, सी आई टोल्ड यू। It's 4 minus 2 the whole square plus 3 minus 3 the whole square plus 1 minus 5 the whole square which is equal to under root 4 minus 2 का स्क्वायर कितना होता है 2 स्क्वायर 4 plus 0 स्क्वायर 0 plus minus 4 का स्क्वायर 16 which is root 20। yes Anushka and Itachi, root 20 which is 2 root 5, absolutely correct Rishabh, 2 root 5 is the answer। चलो with this easy questions let's do one more। अरे वापस, we are not doing this right। find the distance between the following pair of points, again it's a distance formula। कोई orally बता सकता है, I'm not writing down the steps। x2 minus x1 2 plus 2 4 square minus 1 यानी minus 2 का स्क्वायर यानी 4 and 3 minus 3 0। अरे again root 20 again 2 root 5, ये सेम क्वेश्चन आ गया है क्या? नहीं, आई थिंक द पॉइंट्स वर डिफरेंट, 2 3 5 4 3 1 एंड दिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट 8 नहीं आता यार अनुष्का। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स P, द सम ऑफ whose distances from A and B is equal to 10। अच्छा, there is a point P, let us call that point as x, y, z, and the distance of this point P from A and B is equal to 10। length of PA plus length of PB is equal to 10। Let's apply the formula, distance formula। This is going to be a little lengthy, तो अभी मेरी कंजूसी शुरू होने वाली है, थोड़ा सा हम कंजूसी करेंगे। P को बोलेंगे x, y, z और फिर हमको दे रखा है PA plus PB is equal to 10। ठीक है, अब PA का मैं डिस्टेंस फॉर्मूला आप लगा दीजिए, x minus A is 4 the whole square plus y minus 0 the whole square plus z minus 0 the whole square। वाह, प्लस pb क्या है, pb is under root x minus of minus plus 4 the whole square plus y minus 0 the whole square plus z minus 0 the whole square is equal to 10। बरोबर है pa plus pb। therefore now I don't want this root, so I am taking this one term to the right, है ना। तो देखो अभी यहीं पे मैं कुछ जुगाड़ कर रही हूँ, ये माइनस साइन, आई एम जस्ट टेकिंग दिस रूट टर्म टू द अदर साइड, रूट टर्म टू द अदर साइड, सो दिस विल बी इज इक्वल टू दिस माइनस ऑफ दिस प्लस 10। agreed? now you will square on both sides, so if I square to the left side I get x minus 4 the whole square plus y square plus z square, and on the right if I square the entire term, it's a minus b the whole square formula which gives a square minus 2ab which is x plus 4 the whole square plus y square plus z square plus b square is x plus 4 the whole square plus y square plus z square। therefore ओपन अप करते जो जो कैंसिल होगा, x square minus 8x plus 16 plus y square plus z square is equal to 100 minus 20 times this root term which I open, it gets x square plus 8x plus 16 plus y square plus z square। तुमको आ गया क्या, मेरे से पहले बता दो। x square plus 8x, this is not 16, this is 8, 8x plus 16 plus y square plus z square। some of the terms will straight away get cancelled, x square भी cancel हो रहा है, हाँ। so we have, I am taking this 20 root x square plus y square plus 8x plus 16 plus z square, ये मैंने लेफ्ट में ले लिया और राइट में मेरे पास बचा है, if I am not wrong, 100 plus 16x, am I right? Let's divide this entire by 4, divide this entire thing by 4। अरे श्रेया क्या बात है, dividing by 4 I get 5 times under root x square plus y square plus z square plus 8x plus 16 is equal to
25 plus 4x. Again I will square this. Again I square this. बच्चों लास्ट में we want the equation, ठीक है? तो इक्वेशन को सिंपल रखना है, रूट वूट नहीं चाहिए अपने को. So again if I square 5 square 25 times x square plus y square plus z square plus 8x plus 16 is equal to, यहाँ पे again a plus b the whole square formula which is a square यानी 25 square 625 plus 2ab 50 into 4 200x plus b square यानी कि 16x square. Am I correct? This gives me 25x square plus 25y square plus 25z square. 25 8 जा कितना होता है 200x plus 25 16 जा 400 is equal to 625 plus 200x plus 16x square. चलो जो बहुत सारी चीजें कैंसिल हो सकती है, शायद सिर्फ 200 कैंसिल होगा. एंड व्हाट अनुष्का इज सेइंग लुक्स टू मी इज करेक्ट. यहाँ पे कलर चेंज करता है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द आंसर. इट्स 25x square plus 25y square plus 25z square and we have 400 over here and 625 that amounts to minus 16x. Okay, this is 25x square minus 16x square will give me 9x square. That's right. इसको एक साथ में लिखकर 9x square लिखते हैं, खत्म करते हैं स्टोरी को. 9x square plus 25 plus 25 minus 225 equal to 0 and that's the required equation. कितना लंबा क्वेश्चन है यार, मतलब इजी भी तो है ना. आई अंडरस्टैंड लेंदी है बट ज्यादा दिमाग तो लगाना है नहीं. इट्स ऑल कैलकुलेशंस गाइस आफ्टर ऑल. So the sum either has to be tricky and small, lengthy and easy. What do you prefer? Tricky and small or lengthy and easy? What do you prefer? मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना, ट्रिकी होता है इतना कि आपको फर्स्ट स्टेप क्या करना है समझ ही नहीं आता. You don't know what the first step should be. Then we are stuck. तो लेंदी अब कैसे लेंदी एंड इजी चलेगा मैम, बट ट्रिकी मत बनाओ. हमने देख रखा है जेई में क्या हाल होता है हमारा ट्रिकी क्वेश्चन में, है ना. हमको पता ही नहीं चलता है क्वेश्चन पढ़ के कि है कौन से टॉपिक का. हमको पता ही नहीं चलता है फर्स्ट स्टेप फॉर्मूला लगाना है कि कुछ और करना है. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू. यू सिलेक्ट बॉस. See, both has its own flavor. This is both. चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं. So this was the required equation. You guys were correct and let's move on to the next question of section formulae. Find the coordinates of the point which divides the line segment, which divide the points in the ratio 2:3 internally. Internally divide कर रहा है वो, ठीक है. So as usual, let us say your m/n is given to be equal to 2:3. ये आपका इंटरनल डिवीजन का रेशियो है. अब सबको आता है, बच्चे को यहाँ पे इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूले आता है. Am I right? It's xyz is equal to mx2 plus nx1 upon m plus n, my2 plus ny1 upon m plus n and mz2 plus nz1 upon m plus n. This is your formula. मतलब बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लाई m और x2 n के साथ x1 ऐसे क्रॉस लेना होता है. तो x2 x1 भी मेंशन कर ही देते हैं हम लोग. x1 y1 and z1 is equal to -2 3 and 5 and x2 y2 and z2 is equal to 1 -4 and 6. ये सब कुछ लिखना होता है बच्चों. मार्क्स चाहिए ना. If you want marks, you have to mention everything. You have to write the formulae. चलो apply the formulae. So find the coordinates of the point. So let the coordinates of required point P be x, y and z. So we are interested in x, y, z.
which is given by the formula I have wrote on the top. Let's apply the formula. M is your 2, x2 is your 1, 2 into 1 plus 3 into minus 2 upon 2 plus 3, comma 2 plus 3 तो आना ही है यार, लिख देते हैं फटाक से. चलो, m y2 is minus 4 plus n y1 is 3 and m z2 is 6 and n z1 is 5. Am I correct? So this is 2 minus 6 minus 4 by 5 minus 8 plus 6. माइनस 8 प्लस 6 कितना होता है? माइनस 2 बाई 5. ओ माइनस 8 प्लस 6 नहीं, 9, 3 3 जा 9, सो इट्स माइनस, ये 1 बाई 9 हो जाएगा. माइनस 8 प्लस 9 इज 1 बाई 5 एंड लास्टली 2 6 12 प्लस, यहाँ पे कुछ साइन का झोल तो नहीं हुआ है. 2 6 12 एंड 2 5 3 5 जा, लुक्स करेक्ट, 15 बरोबर 27 बाई 5. चलो, ये है आपका एक्स वाई जेड. एक्स वाई जेड का कोऑर्डिनेट्स मिल गया. इट्स डन डन एंड डन. यू गॉट 3 मार्क्स. यू गॉट 3 मार्क्स. ओके, and now the same question guys, same question. अब ये डायग्राम भी देख लो. We consider the point P which is dividing internally in the ratio 2:3. Now for the same thing, we have to check out if it's dividing externally. So let us take a point P outside which is x, y, z and is dividing your AB in the ratio 2:3. In the ratio 2:3, that I believe is your next question. Yes, it is. So for external division, the only difference in formula will be your minus sign. So guys, I am writing down the formula. I am hoping that you are also writing with me. mx2 minus nx1 upon m plus n. my2 minus my1. I know I can skip this, you will understand, but then let's practice so that if I write, you will also write and it will be your practice also along with me. Here m is to n is given 2:3 and your x1 y1 z1 and x2 y2 z2 is also given. Same question है. Let the coordinates of required point P be x, y and z. So x, y, z using the same type of formula. हाँ जी, हो जाएगी यार अश्वी पटेल, हो ही गया. चैप्टर इज डन. 2 more questions. Your exercise, your textbook has only 2 exercise. Your textbook has only 2 exercise. एक distance पे, coordinates पे है और एक section formula पे है. पहला एक्सरसाइज तो एकदम हलवा है, चिंदी, वेरी इजी. फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मैं एंड में बता दूंगी क्या क्वेश्चंस है, किस टाइप के क्वेश्चंस ऑफ योर फर्स्ट एक्सरसाइज. लाइक एक्स वाई प्लेन है तो जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई जेड प्लेन है तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, लाइक दैट. 8 79 minus 8 79 minus 6 is the answer. Is it? Is it? कर लो विश्वास ऋषभ. नीचे करेंगे 2 minus 3 2 minus 3 2 minus 3. ऊपर करना है जो अभी अभी पिछले टाइम पे किया था ना, वही बस बीच में माइनस साइन आ जाएगा. ये जो प्लस है वहां पे मैं माइनस डालूंगी. राइट. अब सभी लोग बता दो आपको आ गया कि नहीं. डू यू वांट मी टू सॉल्व? यू वांट मी टू सॉल्व और नॉट? टू 1 are 2 plus 6 8. 8 upon minus 1 is minus 8. Minus 8 plus 9. 1 upon minus 1. Okay, this is minus 8 minus 9. Minus 17 upon minus 1 is 17. And 12 minus 15 minus 3 upon minus 12 minus 15. Minus 3 upon minus 1 which is plus 3. Thank you Ashwi.
फुल रिवाइज करने में कितना टाइम जाएगा? बेटा हमने वन शॉट सीरीज शुरू कर दी है, बस आप इसके साथ साथ रिवीजन शुरू कर दो। ऋषभ यहाँ पे 3 आएगा, 6 नहीं, एक बार चेक कर ले। अरे वो -1 को ले लेना ऊपर। सी दिस इज व्हाट वी आल्सो गॉट, -8, 17 and 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला शो दैट द पॉइंट्स A, B and C are collinear. Now this is also a type of question you will encounter in your textbook. Show that 3 points are collinear. In order to show that the 3 points are collinear, ये जो point C है, it should divide your AB in some ratio. तभी वो collinear माना जाएगा ना। C should divide it in some ratio. Now let us say we don't know what ratio is that, so always we take it as k:1. Determinant is 0. ये ले, ये तो हाई फाई हो गया थोड़ा। डिटर्मिनेंट ठीक है, कर लो। डिटर्मिनेंट 11th में नहीं पढ़ा है ना। So we will divide using section formula, guys. You have to use section formula. It's specified. तो k:1 के रेशियो में हम अज्यूम करते हैं कि C is dividing it in the ratio k:1. So it means your m:n is nothing but k:1. And C का coordinates है 0, 1/3. It is dividing the coordinates of A and B. तो अभी आप वही फॉर्मूला यूज करो। Your A 2, -3, 4. Assume it to be x1, y1, z1, and your B coordinate, which is -1, 2, 1, assume it to be x2, y2 and z2, guys. With all this information, apply the same formula that we are doing so far. Let's calculate quickly. We will get something. Let's see. चलिए, it's mx2 plus, मैं फिलहाल कंसिडर कर रही हूँ इट्स डिवाइडिंग इंटरनली। इट कैन डिवाइड एक्सटर्नली ऑल्सो गाइज, कोई रूल नहीं है इंटरनली होगा, एक्सटर्नली भी हो सकता है। बट देन इफ इट्स एक्सटर्नली, इन द एंड आई गेट द वैल्यू ऑफ k एज नेगेटिव। अगर k पॉजिटिव मिला, इट्स डिवाइडिंग इंटरनली। k इज नेगेटिव, इट मीन्स इट इज डिवाइडिंग एक्सटर्नली। सो विल गेट टू नो। फर्स्ट अज्यूम इट्स इंटरनल। सो k into -1 plus 1 into 2 upon k plus 1, फिर k plus 1 लिख लो, it's easy, it feels satisfying. Then k into 2 plus 1 into -3, k into 1 plus 1 into 4, which is equivalent to -k plus 2 upon k plus 1, 2k minus 3 upon k plus 1 and k plus 4 upon k plus 1. This is your 0, 1/3 and 2. Equate any one of the things that you want. 0 is equal to -k plus 2 by k plus 1. How much is the value of k? K is equal to 2 from you. K मिल गया 2. अब क्या करें? इसका मतलब it's dividing in the ratio 2:1. It's dividing in the ratio 2:1. चेक कर लेते हैं एक बार. Yes. So k is 2:1. Point C, divide the line segment in the ratio 2:1. And hence points A, B, C are collinear. अगर collinear नहीं होता तो डिवाइड ही नहीं करता ना यार. हेलो सानिध्य. चलो गाइज, लास्ट क्वेश्चन में जाने से पहले आई जस्ट गिव यू कपल ऑफ आइडियाज कि ये जो आपका, बिफोर आई डू द लास्ट क्वेश्चन, ये जो आपका XYZ प्लेन था, लेट मी शो इट टू यू वंस अगेन. ये वाला any plane will divide, this will get divided, any space will get divided into 8 octants. Now what are these octants? आप लोग जब XY कोऑर्डिनेट बनाते थे, ये X और Y, तो X की पॉजिटिव साइड नेगेटिव साइड दोनों लेते थे, and it used to divide the plane into four quadrants, first, second, third, fourth. ऐसे 4 quadrants divide होते थे. It was 4, so they were called as quadrants. Now if you have these 3 lines, these are not actually 3, these are 6 lines. Why? Because Z का negative side, X का negative side and Y का negative side.
So total these lines will divide the entire space into 8 equal parts, and those are called as octants. Octants means 8 parts. Now it's a little difficult to show you because the screen is 2D, तो I cannot show you कि वो 8 octant दिखेंगे कैसे. But अगर आप थोड़ा सा imagine करने की कोशिश करो उसको, थोड़ा सा imagine करने की कोशिश करो, तो I can give you mathematically आप कैसे सोच सकते हो. X, Y, Z अपने 3 coordinate system है. जब x y coordinate system था तो what were the 4 quadrants? x positive y positive was your first quadrant, x positive y negative एक quadrant था, x negative y positive एक quadrant था, and दोनों negative दूसरा quadrant. So these were your 4 quadrants, isn't it guys? Both positive, one negative, one positive, one positive, one negative, and both negative. These were your 4 quadrants. Similarly, if you have 3 एक्सेस, सो क्या क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकता है. एक होगा तीनों पॉजिटिव, एक होगा एक्स नेगेटिव एंड वाई जेड पॉजिटिव, नेक्स्ट विल बी एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव जेड पॉजिटिव. इट कैन ऑल्सो बी एक्स वाई पॉजिटिव जेड नेगेटिव, देन एक्स पॉजिटिव वाई जेड नेगेटिव, देन एक्स एंड वाई नेगेटिव जेड पॉजिटिव, एक्स एंड जेड नेगेटिव वाई पॉजिटिव. ये कितना हुआ? And there is one more, x, y, z, all 3 negative. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfect 8. Did you get? These will be the 4 octants. Mathematically, I can show you over here. But 3-dimensionally, you will have to kind of imagine. ऐसे ऊपर 4 quadrants दिखेंगे, नीचे 4 quadrants दिखेंगे. ऐसे 3 lines ऐसे divide करें, 3 planes intersecting, ऊपर 4, नीचे 4. So it will be octant form. And the questions that can come is, hi Arpita, hi Nishant, hi Aryan. Questions can also be, there are a couple of questions, show that it is a right angle triangle, there will be 3 points given, show that it is an equilateral triangle, show that it is an isosceles triangle. How will you show that it is right angle? One side square plus other side square will be equal to third side square. How will you show it is isosceles? Any 2 sides will be equal. How will you show it's equilateral? Any 3 sides will be equal. So these will be the techniques that you should use in while solving questions like this. Is that okay? Chalo, shall we go to the last question of the days? Cool guys, all my beautiful students. Chaliye, find the coordinates of the points which trisect the points P and Q. Trisect means 3 parts में divide करना. So if this is your point P and Q, there are 2 points which are trisecting it, and all these 3 parts are equal. P का coordinates we know, Q का coordinates we know. Let the coordinates of A be something and the coordinates of B be something. So if I call the coordinates of A as ABC and B as PQR, we are interested in finding ABC and PQR. We are interested in finding ABC and PQR. अब कैसे करें? So can I say that this point A divides PQ in the ratio 1:2? Because if each part is 1, guys, each part is 1. Because all 3 are equal. So this AP is to AQ will be 1:2. A divides PQ in the ratio 1:2. Do you agree with me guys? To use the section formula, your point P is 4, 2, minus 6 and your point Q is 10, minus 16 and 6. Come on, quickly tell me what is the coordinate of A. ABC की values क्या है बच्चों? चलो जल्दी get your pens. This is your x1, y1, z1 and this is your x2, y2 and z2. Using section formula ABC will be equal to m plus n is 1 plus 2. Let me write that for the satisfaction, and mx2 plus nx1
my2 plus ny1 and mz2 6 है ना, yes, plus nz1. Everybody, what is the answer? 10 plus 8 18, minus 16 plus 4 minus 12 by 3, and here it is 6 minus 12 minus 6 by 3. So ABC is coming out to be equal to, oh right, 6 minus 4 minus 2. 6 minus 4 minus 2. If this is your ABC, what will be your PQR? This ABC we know. So now point A divides AQ. Sorry, point B. Point B divides AQ in ratio 1:1. यानी कि B is midpoint. B is midpoint of AQ. So apply midpoint formula for B. B क्या है? PQR, and that's equal to midpoint formula between A and Q. A we have got 6 and Q we know 6 plus 10 by 2 minus 4 minus 16 by 2 and minus 2 plus 6 by 2. That's coming out to be equal to 16 by 2 8 minus 4 plus 6 2 by 2 1 and minus 2 plus 6 4 by 2 2 8 1 2. Am I right? ये minus 16 है कि plus? अच्छा मेरे को ये ठीक है. This is minus 16. I read it as minus 4 plus 6. I read it as minus 4 plus 6. ऐसा दिखता है. ठीक है. Minus 4. Okay. So this is yeah. Minus 20 by 2, which will be minus 10, and this will be 2. That's your B. So A और B का coordinates मिल गया है बच्चों. Your A is 6 minus 4 minus 2 and your B is 8 minus 10 and 2. हाँ, वो मेरे को minus 4 plus 6 दिख रहा, वो minus 16 है. Cool. So that was all about your coordinate geometry. All your exercises have been covered very well, and this is the homework question of the day. You have to solve this question and tell me what is the answer. हमने centroid पे question नहीं किया है, but I have showed you the formula of centroid. So do this and your topic is over. Yes, it's a very easy chapter और मजा आ गया आज लेक्चर में, मजा आ गया. A B C D आपको सिंपली मेरे को आंसर बताना है which one is the correct answer. And refer exercise 12.1, 12.2 and 12.3 for more practice. Do your miscellaneous. For even more practice, do exemplar, do RD Sharma, or karo. Let's practice. Practice makes man perfect, and women also. रोहित कुमार, अरविंद सर से बोलो कि हिंदी चैनल भी लेकर आए नीट का. अच्छा ठीक है, आप चैट बॉक्स में लिख दो यार. ठीक है, मैं आप चाहते हो मैं पर्सनली आपका काम कर दूं. ठीक है, डन. आस्था मेंटी इज नेक्स्ट सेशन. सो यस गाइज, वी टुडे फिनिश 3D ज्योमेट्री. ये कॉन्सेप्ट्स को याद रखना बिकॉज नेक्स्ट ईयर मे बी सेम टाइम वी विल बी डूइंग 3D ज्योमेट्री. विल यू बी डूइंग नेक्स्ट ईयर सेम टाइम 3D ज्योमेट्री विथ मी इन 12th standard? It will be a little difficult. Line, plane, so many formulas will come into picture. Angle between line, angle between plane, angle between line and plane, direction, cosine, direction ratio, so many things. So next year, similar, same time, around same time, we'll be doing it. So remember this well with a point of view that you have to carry forward next year also. So every Monday, Wednesday, Friday, class 11 people. Today was Wednesday. Friday we are going to do the mega menti of the same topic 3D geometry, which will be easy. You are going to rock it. Let's see who will rock it more. Every Tuesday, Thursday, Saturday is your class 12. So class 12 में भी बॉस मैं बता दूं कि आपका कल जो है वो होने वाला है मेगा मेंटी ऑफ विच टॉपिक 3D ज्योमेट्री. यस, सुपर क्रैश कोर्स. मेगा मेंटी नहीं है बच्चा, ये है बोर्ड एग्जाम क्विज. दिस इज योर बोर्ड एग्जाम क्विज. बोर्ड एग्जाम quiz. So board exam quiz is Thursday, kal 4 PM sharp. We will meet you. Okay guys,
Have a great day. Thank you so much. And I hope you learned something today. If you learned, do like the lecture. है ना, जाने से पहले लाइक करके सब्सक्राइब करके अभी अभी फिर ही आप जाना. I'll be very happy to read your comments. Do solve the homework question also. Thank you. Bye bye. Have a great evening, all of you. Yes, Shreya, put that in the comment section. Sure. Bye bye. Keep smiling, all of you.